listeners, welcome back to All Rounders 10. We are going to initiate a special set of series regarding the players. उनकी रैंकिंग करेंगे. T20 World Cup is around the corner, so we for today have decided to pick up the eight current active players, the top eight current active players, I should say. We're gonna debate between us five members alongside me, five panelists, should I say. Uh, I would be letting you know the criteria कि किस basis पे हमने decide किया या किस basis पे हमने pick किया. But I am pretty much excited. My first ever interaction, and it is players from All Rounders 10 team to host Osama Bhai. His podcast you all might be knowing very well. That is Tepe on the channel of Ali Aftab Said. So thank you so much Osama Bhai for joining. क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक. थैंक यू अहमद फॉर हैविंग मी. प्लेयर सो एक डुओ हमारे साथ होता है पिंच हिटर से उनका इकट्ठे तारुफ करवा देते हैं. ऑफ कोर्स रेगुलर फीचर रहते हैं. कोई प्रॉपर इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं है. बट वार्म वेलकम तला एंड जैद, क्या हाल चाल है? Alhamdulillah, great to be back. I think I missed a couple of recordings, but this is a really interesting concept and should be a fun recording. हाँ. और फिर कराची से दो फ्रेंड्स हैं. आई रियली लव टॉकिंग टू देम, बोथ ऑफ देम. अरम एंड इमाद, क्या हाल चाल है? अरम, होप आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे रहे होंगे. Yes, Alhamdulillah, they went well. Thank you for having me, Ahmed. I've been looking forward to it after the break in the exams. जब break really helped us all because regularly show करते रहते तो kind of break helped really all of us. Also, viewers, you all are pretty much part of it. Perfect. So viewers, here is our opening flight, top 8 T20I players. अभी बिट बाय बिट आपको मजीद डिटेल्स एंड मजीद पैरामीटर्स पता चलते जाएंगे. मूविंग फॉरवर्ड, सिलेक्शन पैनल अभी मैंने इंट्रोडक्शन करवा चुका हूँ. जस्ट टू रिपीट, जैद, इमाद, तलहा, अरम एंड ओसामा. सो जो भी प्लेयर्स पिक किए हैं, जो भी हमने आगे पॉइंट्स क्रिएटेड आपको बताऊंगा. These five people were kind of selectors, you can say, in lazy terms. So they're gonna debate कि यार इस प्लेयर को इस कैटेगरी में क्यों पिक किया, और बिल्कुल पिक ही नहीं किया टॉप 8 प्लेयर में. Fingers crossed. Moving forward, here is some criteria कि जो players हम discuss करने लगे हैं. These players should be currently active. Either in leagues or international, it is fine. All time performances count की जाएंगी, both in leagues and international combined. कुछ OGs को exclude किया गया because it kind of helps, क्योंकि clash of eras है. Like MS धोनी अभी leagues में आप कहेंगे कि यार leagues में खेल रहा है, but 2022 onwards he is not part of Indian national team setup. और like 2007 से वो T20 खेल रहे हैं, तो it kind of अभी के जो क्रिकेटर्स हैं जिनका लाइक 6-7 इयर्स में, तो थोड़ा उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी. वी आर करंटली रिलाइंग ऑन द प्लेयर्स एक्टिव इन द सर्किट. सो धोनी को हमने रूल आउट किया हुआ है. पोलार्ड, नारायण, इमरान ताहिर वर सर्कल एज वेल. सो दीज प्लेयर्स हैव बीन रूल्ड आउट. पॉइंट्स का क्राइटेरिया ये कि इन पैनलिस्ट को आई डायरेक्टेड देम टू पिक 8 प्लेयर्स इन द ऑर्डर फ्रॉम 1 to 8. सो फॉर एग्जाम्पल उसामा भाई ने किसी प्लेयर को पिक किया 8वें नंबर पे, दैट प्लेयर विल बी गेटिंग 1 पॉइंट. जो उन्होंने 7वें पोजीशन पे पिक किया होगा, ही गोना गेट 2 पॉइंट्स. तो इसी तरह से लाइक इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जाएंगे. जो उन्होंने फर्स्ट पोजीशन पे पिक किया होगा उसे 8 पॉइंट्स मिलेंगे. तो 5 पैनलिस्ट हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 8, 40 मैक्सिमम पॉइंट्स आर ऑन ऑफर फॉर ईच प्लेयर. तो जिस प्लेयर के पास कम्युलेटिवली ओसामा, आरम, जैद, इमाद और तला के कम्युलेटिव पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाएंगे, वो लाइक रैंकिंग में ऊपर चलता जाएगा फ्रॉम 1 to 8. प्रेटी मच इजी टू अंडरस्टैंड, आई वुड से. लास्टली, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑडियंस का इसमें क्या रोल है. ऑफ कोर्स यू कैन गिव वार्म वेलकम एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल द सपोर्ट सो फार.
here you go. आपने क्या करना है? आपने 10 प्लेयर्स की रेटिंग भेजनी है इन्हीं क्राइटेरिया पे रहते हुए, फ्रॉम 1 to 10। टॉप 8 प्लेयर्स तो हमारी आज की डिस्कशन डिसाइड डिसाइड कर देगी। आप हमारे ट्विटर हैंडल पे या जब आपके पास ये वीडियो पब्लिश हो जाएगी, जो नंबर 9 और नंबर 10 होंगे, जिसके वोट ज़्यादा होंगे, जिसकी कैटेगरी या रैंक ज़्यादा होगी, ऑफकोर्स जो पॉइंट्स का क्राइटेरिया मैं बता चुका हूँ, तो वी gonna publish it on our X platform and YouTube community as well। so एक तरह से टॉप 10 प्लेयर्स हमारे पास आ जाएंगे। सो दैट इज ऑल फॉर लाइक अपडेट के पॉइंट्स का क्राइटेरिया क्या होगा, डिबेट कैसे चलेगी। आई थिंक सो इट इज टाइम टू गिव अ ड्रम रोल। सो here we go, debate is about to begin। आउट नंबर 8 पे जो प्लेयर आए हैं उनकी अनाउंसमेंट वीडियो देखते हैं, एंड here we go। Australians, oh let us rejoice, for we are one and So on number 8, from the picks of Zaid ने बिल्कुल पिक नहीं किया टॉप 8 प्लेयर्स में, इमाद ने भी पिक नहीं किया, तला पिक हिम ऑन थर्ड, आरम पिक हिम ऑन सिक्स्थ, ओसामा भाई ने भी पिक नहीं किया। दैट इज डेविड वार्नर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम एक ग्रुप बन रहा है ज़ैद, इमाद एंड ओसामा का। Sorry, So एक चीज क्लैरिफाई करनी है, is it third Yeah. from the bottom or the top? Because I picked him third from the bottom. थर्ड फ्रॉम टॉप, या ओके। सो ग्रुप बन रहा है ज़ैद, इमाद एंड ओसामा का, जिन्होंने वार्नर को टॉप 8 में पिक ही नहीं किया। सो स्टार्टिंग विद ओसामा भाई, व्हाई ही डिडंट मेक into the cut of your top 8। So Osama bhai, over to you regarding David Warner। Like एक दो दफा I thought that I might pick David Warner in my top 8 players, but then actually like international performances, I was looking at them. So like yes, he has like performances के डेब्यू पे T20 100 की थी और उसके बाद भी he has been performing in and out, but then I sort of gave weightage more to his World Cup performances. So like he's been Okay. playing in the World T20 since 2010, and if you look at तो उसमें yes he has played some performances, but overall like his record is not as good as probably would say in the ODI format, or as good as that his performance in the other format. So that's why वो मेरे ख्याल से there were other contenders जो कि वार्नर से ज़्यादा बेहतर थे, if you look at के उनकी performances, Yeah. impact performances जितनी थी. So like T20 cricket में you are more at looking at के impact कोई player कितना provide करे आपको. So in terms of that, I thought that Warner did not make the cut for me. ओके, इंटरेस्टिंग थॉट्स। तला आपकी तरफ आते हैं, थोड़ा सा कंट्रास्ट फेंक लेते हैं, बिकॉज आपने तीसरे नंबर पे पिक किया हुआ है। सो व्हाई सच हाई कैटेगरी? बिकॉज Actually, आराम की मैंने तीसरे Yeah. नंबर पे पिक नहीं किया, तो मैंने 3 पॉइंट्स दिए थे, मतलब he was the third from the bottom, क्योंकि Oh, बॉटम okay. प्लेयर को 1 पॉइंट मिलता है, तो he was the 6th player for me। ओके, एनीवे अगेन मैंने पॉइंट्स चले के ही विल अगेन मेक द कट ऑन टू द 8th पॉइंट। सो एनीवे लेट्स गिव योर थॉट्स व्हाई ही इज इन योर लिस्ट, और 6th पे क्यों है? 6th पे इसलिए है कि obviously there are some players who I think are better than him, like more of the West Indian all-rounders or even Maxwell, but he still sneaks into the top 8 for me, basically on the base of IPL performance, क्योंकि for me either you count the top leagues and the World Cup, or there's no point analyzing like T20 performance, क्योंकि bilateral से बहुत dilute हो जाती हैं rankings वगैरह। Yeah. So basically I think on the base of his IPL performance he does sneak into the top 8 according to the criteria. Okay, and Aram, how about you? Why he does make into your top 8? Yeah, I kind of agree with what Tala had to say, but just my thinking was that if we rule out recency bias out of when we're making decisions right now,
अगर आप recent years को थोड़ा count off करें, so he has actually done a lot well. And if you look at his overall numbers, so 40 की average, 140 का strike rate isn't as bad if you consider a player's overall record. And if you look at specifically over the last few years, it has gone down a bit, but uh, it still reflects कि उसने इससे पहले बहुत अच्छा खेला है, which is not being able to Yeah. downplay his entire record. So I felt that he needs to be in the top 8, but he was lower down in my ranking as well for that particular reason. ऑल राइट, जैद आपकी तरफ आऊंगा बिकॉज इन लोगों ने मुझे इंडिविजुअली पिक्स सेंड किए थे, तो मैंने जैद को कहा कि यार कोई प्लेयर भूल रहे हो, लाइक वेरी ऑब्वियस नेम आप भूल रहे हो। जैद ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि विच प्लेयर, सो मैंने फिर ये नेम थ्रो किया कि डेविड वार्नर। इसने कहा फिर भी नहीं बनता, सो ही हैड फ्यू अदर प्लेयर्स, बट एनीवे व्हाई लाइक व्हाट वाज द थिंकिंग बिहाइंड इट कि बिल्कुल ही आपकी लिस्ट में नहीं है डेविड वार्नर? यार वार्नर मुझे अक्रॉस फॉर्मेट्स काफ़ी ओवररेटेड लगता है, इन बेसिकली एवरी फॉर्मेट। आई थिंक वो ज़रा ओवररेटेड है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है। मे बी बिकॉज वो ऑस्ट्रेलियन है, आई डोंट नो, मुझे लगता है। दूसरा यार बोल्ड कॉल क्लिकबेट। बस यही रीजन नहीं बता रहा हूँ यार। और दूसरा आई थिंक एक्सेप्ट आईपीएल उसकी परफॉर्मेंसेज आई डोंट थिंक उस तरह रही हैं। इवन आईपीएल में भी आई वुड से कि रीसेंट टाइम में उसकी Like he has not won the IPL. Like he has not won the IPL. I think 16 हाँ। में जीता था when he beat Kohli in the final. सनराइजर्स 2016 में जीता था ना ऐसा राज। हाँ, तब उधर था, राइट। हाँ, लाइक अब देखो ना, ऑस्ट्रेलियन है और आरसीबी का बेचारे का मौका, आरसीबी का मौका ले लिया, एक आईपीएल टाइटल जीत लेगा। ज़ैद अपना एवेंजर बना हुआ है। इमाद टू राउंड ऑफ डेविड वार्नर। इमाद की तरफ चलते हैं। इमाद, व्हाट इज योर रीजनिंग पॉइंट एक्सक्लूडिंग हिम फ्रॉम द टॉप 8 प्लेयर्स? Yeah, so he sort of narrowly missed out in my top 8, and that was and that's probably not his fault actually, not entirely his fault, because for the longest time Yeah. Australians were not prioritizing T20 cricket till till the time they had a T20 World Cup at their home, right? And so Yeah. he didn't play a lot of bilaterals or anything. He just played the World Cups, and surprisingly, in the 2016 World Cup, they played him at number 4, so he wasn't able to deliver that much. So Right. essentially, in the international arena before 2018, we didn't see much performances from David Warner, except that Shuruki performances in the debut or anything. Now, obviously, we know that he's got some great IPL credentials. He won Sunrisers Hyderabad an IPL trophy in 2016. Again, heartbreaks for RCB. It was their best season. But इसमें यही बात है कि we only had that IPL thing to consider. International उसमें arena में ज़्यादा नहीं था, and other players I feel like were better. So that is why he narrowly missed out. ओके, किसी को कुछ हार्ड फीलिंग्स हैं कि 8वें पे क्यों आ गए, या यू ऑल का इधर फाइन के अगर मिस होता भी तो नैरोली मिस होता है, तो बट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स एक्यूमुलेटेड you are fine with it he should be making a cut into the final 8, right? I would just like to add one thing. Okay. Yeah, I forgot to mention this. So Warner was also being pinned as a potential captain for Australia. He had the captaincy credentials, but the Sandpaper Gate essentially ruled him out for that. So if we look at it, he might have been the captain of Australia in the 2021 World Cup that they won in UAE. So again, that would have actually gotten काफी अगर वो कैप्टन होता तो शायद इतने Yes, टॉस ना जीते और वर्ल्ड कप भी ना जीते, तो क्या पता। Perfect. Okay जी, number 8 has been decided. In the final list we're gonna upload, अभी शो के एंड पे भी आपको final list मिलेगी. We're gonna give you the total points tally as well. Here we go.
Dil Pakistan. From Pakistan, it is Shadab Khan. Yeah, let's relish those memories alongside. Yeah, okay. Perfect. I will be stopping the background मैं एक चीज पूछनी है song, अहमद भाई. I would say. हाँ हाँ. मैं तला से बस एक चीज कंफर्म करना चाहता हूँ कि या ये इसने इस्लामाबाद यूनाइटेड बायर्स के अंदर नंबर 1 रैंक किया है शायद आपको, या नहीं उसने नहीं 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 मैंने मेरे Yeah, उल्टे yeah. आ रहे हैं यार, मेरे फर्स्ट फ्रॉम बॉटम है, इज नंबर 8 फॉर मी. Yeah, he is from bottom. Actually, I should have clarified. I have been telling points. Joint बन रहा है, joint seventh बन रहा है, but let's take it from there. Uh, let's take it from there. Anyway, fourth is Osama Bhai. Like highest rating उनके बन रहे हैं, right? Let's start from you, Osama Bhai again. फिर आरम आपकी तरफ आऊंगा because you haven't picked him totally. Contrasting opinions लेते हैं. So ओसामा भाई, शदाब खान के क्या क्रेडेंशियल्स हैं जिसके बेस पे आपने फोर्थ पिक दिया शदाब खान को? I think like Shadab is like one of those rare cricketers like who is very multi-dimensional, and we often talk about T20 cricket. We look at it from the impact of from the lens of impact. Okay, how much impact you are basically making in a T20 game, and Shadab is the sort of player जो कि fielding ho, Yeah. bowling ho, batting ho, he covers all of this, and he's so young. And if you look at his career trajectory, he has basically like the performances that he has put up, especially like in important crucial games, he has always stood up. You started from like the 2018 ka PSL final, like debut season से, but after that even if you go on to Pakistan की जो important matches थे World T20s में, he has also stood up in those. He has recently won the PSL as well. So like he fits the bill for like अगर कोई पाकिस्तान का सबसे impact T20 प्लेयर है इस वक्त तो वो शादाब खान है. और इवन दुनिया Yeah. में भी अगर आप देखें तो like people who can be as good as with the bat and with both the ball, there are very few players. Like you talk about like all rounders की, but those all rounders are like more of tilted towards कि वो ज़्यादा bowling all rounders हैं या batting all rounders हैं. But I feel about Shadab is कि he could play as a specialist batter and he could play as a specialist bowler. And on top of that, his fielding is amazing. So he was a no-brainer for me. Like he's one of the very impactful players in World T20 in T20 cricket internationally. हाँ, इंटरेस्टिंग थॉट्स. अरम, इन थॉट्स के बाद भी आप कन्विंस नहीं हुए कि शदाब को टॉप 8 में होना चाहिए? बट एनीवे, फर्स्ट गिव योर थॉट्स, और उसामा भाई आपको कन्विंस कर सके हैं कि नहीं कर सके? Yeah, obviously, everyone is entitled to their opinion, but the decision making in my head behind not having Shadab, obviously he missed out. I would have placed him in the last few numbers, is because of the fact that I believe we are still to see the best out of Shadab Khan in all facets of the game. Okay. I think he ताला still has to deliver more, and hopefully, अभी जो World Cup आएगा, we get to see that complete Shadab Khan, no performance in bets. And I think if you look at Shadab individually in different phases of his career up till now, which is not a large sample space by any means, if you look at any international player, I feel he has done good. He's done better in different bits and pieces. But if you look at it at a whole, like the injury concerns, beach में and all that, he had to go through a lot of things. But in my opinion, major reason यही था of him missing out a spot in my top 8 is that I still believe that he can do better, and there's room for a lot of improvement for our future captain, in my opinion. परफेक्ट. इमाद, आपकी तरफ आते हैं. जिस पोजीशन पे पिक हुआ है, जो एग्जैक्टली पिक्ड इन दैट पोजीशन, व्हाट फ्लावर्स यू गोना थ्रो टू हिज नेम? Yeah. So first of all, Go I on, was go on, just go on. I was just considering his performances in the T20 World Cups that we've had, and I think he was Pakistan's man of the tournament in the 2022 World Cup, and he has been extremely impactful, as Osama bhai mentioned that impact is extremely important in T20 cricket, and I think that he is Pakistan's best T20
cricketer in terms of what he provides us with, and you just cannot decide whether he's a better batter or better bowler, and I think that is what you need in an all Or a better rounder. And fielder, yeah. yeah, a better fielder too. Yeah, his fielding just Yeah. stops everything. So Huh. these were the reasons why I picked him at number seven. And I think, as Aram mentioned, that we are still to see the best of Shadab Khan. I totally agree with that, and I'm very sure that he's gonna go up above number seven when we're doing this 2 years, 2 years later from now. इंशाल्लाह 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 किसके थॉट्स बाकी रह गए तला आपके थॉट्स इवन तो इधर पोजीशन आपकी मिसिंग है हाँ ज़्यादा आपकी तरफ आता हूँ बट या अवर ऑन इस्लामाबाद यूनाइटेड बॉय सो लीग्स में परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान में परफॉर्मेंसेस इधर तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक वाइब बन गए हैव वी सीन वन पीक ऑफ शादाब खान इट इज़ फेयर टू से बना कह सकता है कि दूसरी पीक आएगी तीसरी पीक आएगी बट 2021 का वर्ल्ड कप 2022 का वर्ल्ड कप bowling wise he was the best performer I would say so yeah how do you rate his performances in leagues and internationals तला आपकी तरफ माइक म्यूट है Yeah, I wouldn't say bowling wise he was the best, but all round he definitely was the best player in the two tournaments. And yeah, चलो or agar, go on like, if you look at his PSL performances, अक्सर ये होता है कि he has one fantastic season then one not so good season. मतलब 2020 में he exploded with the bat, like he came at 4-5 regularly. 21 में इतना अच्छा season नहीं रहा था, और फिर 22 में he was the best player in the tournament. 23 में again not a very good season, and then this year he bounced back again. So if he wants to go higher on the list, he'll have to keep repeating these performances year after year. And obviously in the World Cup, I think he and Shaheen probably will be Pakistan's most crucial players if used correctly. जा और जैद आपकी तरफ आ रहे हैं बाबर के होते हुए शादाब की यूटिलाइजेशन तो होनी नहीं तो जैसे सब लोग कह रहे हैं कि यार अभी हमने और पीक देखनी है so should we be fearful about that factor but anyway have your thoughts about Shadab Khan in your pick as 8th over to you यार बाबर के होते इस्लामाबाद अभी आई थिंक अरहम ने कहा था कि लाइक 2-3 सालों में तो आई होप कि कम से कम तब तक बाबर कैप्टनसी से हट जाए तो पूरी मिल जाए शादाब की यूटिलाइजेशन सही हो जाए लेकिन मेरा हाल है यही एक वजह है कि इसकी इंटरनेशनल में उस तरह से यूटिलाइज नहीं हुआ तो उसने अपना टैलेंट शो नहीं करवा पाया आई थिंक वरना वो इस लिस्ट में थोड़ा और ऊपर भी हो सकता था इजीली क्योंकि तल्ला जिस तरह गिना था उसके लाइक PSL सीजन पहले था आई गेस के एक बुरा एक अच्छा वाला सीन लेकिन 2022 से आई थिंक उसके कोई खास इतने बुरे सीजन PSL के गए नहीं है ये भी इतना खास बुरा सीजन नहीं था लाइक इट वाज अ प्रीटी डिसेंट सीजन और प्लस विनिंग कैप्टन था एंड पे वो तो आई थिंक ये अंडर यूटिलाइज्ड है अभी फिर भी लेकिन 8th पर था मेरी लिस्ट में तो आई थिंक ये मतलब एक बताता है कि काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर है लेकिन इसको वही बात है कि सही यूटिलाइज नहीं करते बस जा ओके थोड़ा And we सा also need digress to just a point we also need to fit in that he's just like 25 26 years old so like in comparison to some of the other players like he has a lot of years ahead of him and probably like जो एक best peak होती है sportsman की वो probably 27 28 onward start होती है so his best years are yet to come. Okay, so number 7 is done. It is time to move towards number 6. देखते हैं छक्का किसने मारा. Let's see. Have some curtains. Then we're gonna see the screen for number 6. Here we go. इंडिया के बारी आगे bro. It is. ओके जी पाकिस्तान से सीधा चलते हैं भारत साइन ऑफ रिस्पेक्ट एज वेल हम सब नेशनलिटीज के एंथम्स भी चलाने की ट्राई कर रहे हैं जस्ट टू एड स्पाइस ऑफ दिस पर्टिकुलर शो अगेन तला आई एम मेकिंग श्योर कि आपकी
कैटेगरी आपकी जो रैंकिंग्स थोड़ा सा मिसमैच हुई हैं. ओके, इट इज मार्जिनल चॉइस बट लेट्स गिव इट अ गो. शायद एक पोजीशन ऊपर जा रहा था बट एनीवे, नंबर 6 पे वी हैव गॉट जसप्रीत बुमराह. जैद, आपने हाईएस्ट पिक किया हुआ, राइट? या जैद आपने हाईएस्ट पिक किया हुआ. जैद, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू. मैं वैसे आपकी पिक्स का नहीं, जरा आपके आगे वाले पिक्स नहीं बताना चाहता. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट मिला लो. इंटरनेशनल क्रिकेट में लाइक अचीवमेंट, लाइक कप्स वाले अचीवमेंट, वो वैसे भी आपके मैट्रिक्स में नहीं है. Expand your metric as well कि किस metric पे आप select करो and have your say about his performances so far, of course. यार मैट्रिक की जो बात है, मुझे लाइक मैंने आई डोंट रिमेम्बर किस प्लेयर के बारे में कहा था अहमद कि कप नहीं जीता हुआ या कप जीता हुआ, ऐसा की बात हुई थी. तो आप डिविलियर्स की बात कर रहे थे गालबन, राइट? हाँ हाँ शायद. तो मैं ये कह हाँ. रहा था कि मैं इस चीज़ को कंसिडर नहीं करता कि एक प्लेयर ने कितनी ट्रॉफीज जीती हैं. आई डोंट थिंक ये प्लेयर की एबिलिटी को जज करने का एक सही तरीका है. ओके ओके. इस लिहाज से तो एबीडी जो है वो एक फजूल प्लेयर फिर है. तो बाबर कप्तान ही रहना चाहिए ना. फिर तो बाबर कप्तान ही रहना चाहिए. यार कैप्टनसी और प्लेयर प्लेयर की एबिलिटीज दोनों चीजें फर्क है. बाबर को ओके तो ओके मैं कहता हूँ ओके. कैप्टन द्वारा बनना ही नहीं चाहिए. सॉरी टू डिस्ट्रैक्ट यू, सॉरी टू डिस्ट्रैक्ट यू. लेकिन आई गो ऑन थिंक अबाउट. हाँ यार बुमराह को इतनी हाई मैंने इसलिए रेट किया है. एक तो इंटरनेशनल में ठीक है कि मे भी उतना परफॉर्म ना कर सके किया उसने अभी तक, खास तौर पर वर्ल्ड कप्स वगैरह में उसकी फिटनेस वगैरह के भी थोड़े इश्यूज रहे हैं. लेकिन आई थिंक अगर आप फिटनेस के इश्यूज को हटाएं उसके, तो लाइक अभी वाला जो आईपीएल है वो आपके सामने 240 230 आराम से हो रहा है मैच में. बुमराह की इकोनॉमी में हालत 6 भी नहीं है, शायद 6 से भी कम है थी लास्ट टाइम. मैं जगह 5.9 5.8 थी. तो आई थिंक लाइक इस वक्त ने भी द बेस्ट प्लेयर अक्रॉस फॉर्मेट्स है कोई है तो बुमराह है. उसका या लाइक हर फेज में बंदा बॉलिंग कर लेता है. तो आई थिंक मैं काफी हैरान हुआ था कि किसी ने भी टॉप 3 में पिक नहीं किया बुमराह को. या इट इज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग. आपने सरप्राइज के बाद की इमाद है स्टार्ट ऑल ऑफ शो. आई वुड सजेस्ट, क्योंकि पिक ही नहीं है टॉप 8 में. इमाद, डिफेंड योर पिक मैन. लाइक अपनी रीजनिंग बताओ. Yeah, again another one who narrowly missed out for me, and the reason हाँ, was really कि shout out. बहुत सारे जो years हैं, हाँ हाँ हाँ. बहुत Go सारे on, go जो on. आईपीएल सीजन्स हैं, आईपीएल सीजन्स हैं, वो both of the T20 World Cups. I think he's missed a lot, and I'm sure the kind of cricketer he is, he would have been in the top three if he had been fit all along. There is absolutely no doubt about his ability and his credentials in Test cricket. The guy won India a Test series in Australia. I mean, who does that? And then in England too. And then he was incredible in both of the World Cups, 2019 World Cup and 2023 World Cup. But as far टेस्ट as की बात T20 नहीं goes, करनी. बात टेस्ट की बात ही नहीं करनी, T20 की बात करनी है. yeah, that's what I'm saying. The guy is very capable, and his credentials show that in Test अक्सर cricket. पाकिस्तानी And वैसे भी हमें दोनों को मिक्स कर जाते होते हैं. But in T20 cricket, we haven't seen his peak yet, and which is why हाँ हाँ. and the reason why he missed a lot of seasons as well. So that's why he narrowly missed out. He still narrowly missed out. That shows how good he is. हाँ. And this T20 और World Cup narrowly जिनके. will be the हाँ. one where he will be at his best, and he might be the reason why India might win the World Cup in West Indies. अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे. उसामा भाई, आपकी लिस्ट में नैरोली इन्होंने पार्ट में, सो व्हाई एट 8th ओवर डू यू? I was like checking my list and I thought ke like no Indians, so like wo I thought ke which Indians I should look at, but like I looked at their batters, so like their performances were not as impactful. Like in terms of like if I look at ke, हाँ mm, if you like yes you can count in Rohit Sharma, but when I looked at like some of his international performances, those were like very bad. Like
in crutch games he sort of was so off color and did not perform well. So in terms of that, like I thought like Bumrah has someone like in the if you look at the IPL, so he has a very good record in that as well. And one of the things like which Imad mentioned about like his recent performances, so I feel like कि जो भी recent years है इसमें like especially since he has come back from injury in the World Cup and the other performances, he is looking the a very complete bowler now. Like now he can take wickets whenever he wants to take wickets. So now I feel like, as Imad said, that in the coming World Cup as well, and probably like till the time he remains fit. I hope so that he remains fit because he's a great player. So we might see the best of Bumrah across formats, and that might also be part of the T20 World Cup. So that's why I thought that Bumrah is like sort of that impactful because you look at India, though they had always had a lot of batting talent, and and if you look at the sort of batting talent India has, they have not justified their batting talent with the Nowhere near there. performances that should be. So that's why a bowler from India sort of made more sense to me to add to the bowling, add to the list because उनकी वो performances शायद bowlers की उतनी impactful नहीं रही जितनी शायद उनके batters की रही हैं. Perfect. Aram and Tala, short notes put कर दो बारी बारी. Aram starting with you, क्योंकि आप दोनों ने fourth पे pick किया. Yeah, I think I agree with most of the points made so far. Yes, considering the fact he has been under a lot of issues, injuries and all, he's been on and off with international side as well. But still, the stats that we're able to see, after all of this, he comes up in the top 4 or 5 bowlers across formats, especially in the T20. I feel कि अभी जो Zaid ने भी point mention किया था current form पे, if you look at it specifically और अगर आप on the whole भी देखें तो I feel he's the most complete bowler out of the Indian lineup. All right. Imad, Tala, any addition or subtractions? I think the others have pretty much said everything. Yeah. Okay. Let's move on. तकरीबन सबकी लिस्ट में as such किसी को harsh feelings नहीं आ रही. Number 6 is done. All right. Here are the curtains. Number 5 की तरफ चलते हैं. You might be intrigued or surprised somewhat. Let's go. Okay. Okay, जी, Rally Around the West Indies, one of my favorite player ever. Dre Russ. Zaid, again, आपकी रैंकिंग सबसे हाईएस्ट है. Aram, नेक्स्ट टर्न आपके लूंगा. Zaid, starting from you, हाईएस्ट पिक आपकी है. So let's start from you. यार आई थिंक कि जो बेसिकली आपने शुरू में कहा था कि ओजीज को T20s के हम नहीं काउंट करेंगे, नारायण, धोनी, पोलार्ड वगैरह, तो आई थिंक कि अगर उनके क्लोजेस्ट कोई है तो वो ड्रे रस है, क्योंकि आई थिंक उससे बेहतर प्लेयर शायद ही कोई हो जो मैंने फर्स्ट पे रखा है. वो भी अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे रखना चाहिए था, नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि आई थिंक कि काफ़ी कंप्लीट प्लेयर रहा है ड्रे रस और काफ़ी सालों से रहा है अक्रॉस एनी बेसिकली जो भी लीग खेला है. ये परफॉर्म क्वाइट वेल, PSL, IPL, जो भी बेसिकली. इवन इन T20 आइज उसने इतने खेले नहीं हैं क्योंकि फिटनेस वगैरह और जो वेस्ट इंडीज़ के मसले रहे हैं. बट आई थिंक स्टिल एबिलिटी स्किल वाइज देखा जाए तो इजीली अमंग द टॉप 2 एटलीस्ट, अगर टॉप प्लेयर नहीं तो ऑफ T20s ऑफ ऑल टाइम. All right. Perfect. I also had him at number 2. Aram, आपके लिस्ट में narrowly make किया. हाँ. And Okay. I just wanted to add one thing. आपकी तरफ आ जाते हैं, आपकी तरफ आ जाते हैं. He's also a PSL winner with Islamabad United, so there's that. Yeah. Of course. All right. Tala के short and sweet thoughts are done. Aram, आपकी लिस्ट में narrowly make किया. That was surprise from me. Justify करो, मैंने ये नंबर ऊपर लेके जाना है आपसे.
Yeah, I think कि एक बड़ा रीजन ये तलहा वाला था कि he won the league with Islamabad United, इसलिए मैंने उसको नीचे पुट Okay, now किया. we know. Jokes aside, I feel it's pretty tricky to rate West Indies players. Uh, uh, Okay. क्योंकि you cannot judge them on set metrics. They are so unpredictable players. I feel कि the only players that we could judge on set metrics from the Windies were who were specialist bowlers or batters. ये जो all-rounders वाली category है, they bring so much to the table, yet they could do absolutely nothing in a number of games. So I feel ये reason था मेरा, but I would be tempted to put him higher up the order when I'm rating my top 8. But I felt कि जो मेरे top 8 बनी थी उसमें he was not been able to go much up. So इसीलिए I put him at the lowest one. But I would not mind him going up. It's not a matter of a skill set missing or anything like that. I just felt कि जो competition था in my rankings, he missed out very narrowly on that. हाँ, नैरोली फिर 8th पे है। चलो सही है। ओके, ओसामा भाई की तरफ चलते हैं। Actually, like when I was making, so मुझे lineup, so I did not knew exactly कि ये points वाला है, so I might have ranked him higher based on that. Or like I was looking at his record, so he has won in Bangladesh, he has won the BBL, he has won the Great CPL, he point. has won the PSL twice, he has won the IPL, so I guess, and he's won the World Cup with the West Indies as well. And Yeah. so his performances are immense. Like World T20 semi-final, he was very good in that. He was very good in the final with the ball. So like overall, I don't think so. There are very few players who can be as good as Russell. Like amazing player. ओके, ओसामा भाई के थॉट्स के बाद एक ही चीज बनती है, एंड दैट इज दिस माइक ड्रॉप केस क्लोज आई वुड से. बट एनीवे, इमाद, आपके थॉट्स रहते हैं, ओवर टू यू. Yeah, longevity, consistent performances. I mean, the guy was 2014 के IPL का MVP, and he's still finishing games for KKR. They are not going to replace him. So that shows that he's been doing his thing for a long time, and he bowls well he's developed the skill of uh, bowling well in death overs too. Pele, he used to bowl the new ball of that, so he's some sort of evolution as well. At the same time, his performances with Jamaica Talawas, it's actually something that we don't talk about much, but वो भी बहुत ज़्यादा जो integral थे उनके title winning Yeah. seasons में, I think दो थे. And then इसके अलावा West Indies के T20 World Cup, I think one of the best players 2016 के World Cup में. So all these reasons. ऑल राइट, सबके थॉट्स हो चुके हैं, राइट? हाँ, ऑल राइट. Number 5, and a shout out to West Indies anthem. I really love it, even though I'm an outsider. But Kamal lyrics, the vibes it creates, really really love it. तो एक दफा दोबारा सुन लेते हैं क्या जा रहा है. So here we go. I think it should be on. Rally round the West Indies. ओके जी, टाइम फॉर द कर्टेंस. तकरीबन हाफ वे डाउन हो चुके हैं, 5 6 7 8, या हाफ वे डाउन. व्यूवर्स एंड ऑफ कोर्स यू कैन एग्री डिसएग्री. आप इंडिविजुअल रेटिंग्स में भी लाइक 5वें पे क्यों आया, आपकी लिस्ट में वो प्लेयर किस पोजीशन पे था, फील फ्री टू ड्रॉप योर एग्रीमेंट्स डिसएग्रीमेंट्स. होप यू आर लाइकिंग, एंड इन केस यू आर लाइकिंग, प्लीज ड्रॉप अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट डन. नंबर 4 की तरफ चलते हैं. हियर वी गो. Number 4, let's see who it is, and let's go. Australians, oh, let us rejoice, for we are one and ओके जी, ऑस्ट्रेलिया का दूसरा प्लेयर आ गया लिस्ट में. डेविड वार्नर के बाद मैक्सी शो. तला, आपसे स्टार्ट करता हूँ. यू हैव गिवन 6 पॉइंट्स टू हिम. Let's build it from there. Over to you, Talha. Yeah, so I think people often talk about AB de Villiers about being 360 degrees player, but
I think Maxwell started like playing those shots around the same time, 2013, 2014. I think usse pehle AB was more of a conventional batter. So I think he deserves, I think, a lot of credit for paving the way for batters that came after him. And another thing to add is that most T20 batters who succeed bat in the top order, while he is more of a number 4, number 5 batter through most of his career. Great point, man. Great point. Sometimes he's opened. I think I remember a 150 not out he made against Sri Lanka as opener too. But mostly he's been at 4 and 5. And despite that, to scores a lot of runs at a strike rate which is 150 plus. And then you add his bowling and his fielding. So I think he's easily one of the top 3 T20 players. Okay, I am kind of taking some leverage. आज के शो में दूसरी दफा ये मोमेंट पर्टिकुलर मेरे लिए आया है, so let's have it. Mic drop moment. Okay, इमाद आपकी लिस्ट में रिलेटिवली लो है. ऑफ कोर्स मैंने जब हम ये चीज़ शुरू में डिस्कस कर रहे थे, जब ये शो प्लान आउट कर रहे थे, मैंने तब भी बोला था कि यार इट इज़ नॉट अ डिग ऑन एनीवन कि वो छठे पे क्यों आ रहा है, पांचवे पे क्यों आ रहा है, बिकॉज जब आप क्रीम ऑफ द क्रीम डिस्कस करो तो मार्जिनल चीज़ें मैटर करते हैं. सो जो मार्जिनल चीज़ें आपके लिए मैटर करके गई और उन्हें ज़रा छठे पोजीशन पे लेके गई, व्हाट वर दोज रीजंस? इमाद, ओवर टू यू. Yeah, I was looking at longevity बहुत ज़्यादा नहीं, obviously longevity तो है, but like consistency was something जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा देख रहा था अपने उसमें. And I feel like sometimes Maxwell, as much as good he is and as much as he's produced some impactful performances, I think some IPL seasons जो थे वो like I think if we count his good IPL seasons, probably 3 होंगे out of 9. So that was the reason why I kind of dwindled away from picking him in top 5, even though he was there at first, but then some other people came in. And so यही एक reason था कि he's always sold on a very high price because teams expect a lot from him, but essentially it doesn't work out in the end. Obviously Australia के जो bilaterals होते हैं, he performs really well there. But even in the T20 World Cups that happened, in the recent ones that I'm talking about, I don't think that he was their best player, right? But still, at the same time, he is at number 6 because he is an impactful player. He is a 3-dimensional player, and again, this type of form में है in this World Cup that happened, he was incredible there. I think he's gonna be really vital for Australia in the coming World Cup. Perfect. Osama भाई आपकी तरफ आते हैं. Over to you. Yeah, like Maxwell, वही utility player है, like 3D, and especially like one aspect of his game which is very underrated is bowling. Like sometimes you see him as a part-time bowler, like someone, but he or very often like वो 4 ओवर करवा जाता है, आपको पता भी नहीं चलता. Like we often talk about the World T20 semi-final जो हम हारे थे ऑस्ट्रेलिया से. मैक्सवेल ने उस दिन जो 4 ओवर किए थे वो basically the difference between Pakistan getting to 190 or 200 rather than finishing at 170. So like उसकी bowling काफी underrated है, and of course like batting तो है ही, like everybody knows how destructive he can be. Great point. I'm loving the range जो हमारी डिबेट की बन रही है. Zad, over to you. यार आई थिंक कि इमाद ने इसने कहा कि आईपीएल में उसकी परफॉर्मेंसेस, आईपीएल में आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ आईपीएल में उसकी कुछ काफ़ी देर से लाइक एक्सेप्ट 1-2 सीजन्स में, हालांकि 2014 वाला एक सीजन था जिसमें मैक्सवेल ने बहुत लाइक कमाल परफॉर्मेंस दी थी. उसके अलावा कोई खास नहीं अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही उसके आईपीएल में. बट उसके अलावा मैं देख रहा था मोस्ट T20 सेंचुरीज का, तो उसकी लाइक 7 T20 सेंचुरीज है जिनमें से 5 इंटरनेशनल्स में है. प्लस जो 7 से ज़्यादा या 7 जिसने भी की हैं वो ज़्यादातर जो है वो सारे टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं, बाबर, बटलर, मैकलम, गेल, इस तरह के. और मैक्सवेल में हालांकि वाइदी प्लेयर है उसमें जो लाइक काफ़ी नीचे 5वें 6ठे पे मोस्टली बैटिंग करता है. तो आई थिंक ये बताता है कि लाइक 5वें 6ठे बैटिंग करना कोई
आसान नहीं है, प्लस उस पे सेंचुरी करना एक और भी ज़्यादा रेयर चीज़ है। तो आई थिंक कि ये लाइक एक टेस्टिमेंट है उसके टैलेंट के लिए। उसके अलावा जो उसामा भाई ने बात की, जिस तरह उसके फील्डिंग और बॉलिंग दोनों ही आई थिंक काफ़ी अंडररेटेड है। वो आपको उधर भी यूटिलिटी प्रोवाइड करता है काफ़ी। तो आई थिंक कि ये काफ़ी लाइक सॉलिड पिक थी। सॉलिड पिक, बिल्कुल सॉलिड पिक। अरम आपके पिक में भी थर्ड पे था, सो हैव योर थॉट्स नाउ। Yeah, I think most of the points have been covered, especially batting की काफी Yeah. बात हो गई है. Bowling में just एक fact I think I'd like to point out कि if you look at the Australian bowling lineup in the past few years, especially the spin department, आप देखते हैं कि you have Adam Zampa there, and they have experimented with a few off spinners there, both left and right armers. But I feel कि जो Maxwell से वो काम जो utility use करते हैं, I feel there could have been a massive change in their trophy cabinet as well as their success overall agar Maxwell would have not been there as their sixth bowling option. I, for one, do not consider that Australia use him as their sixth bowling option. I think कि वो उसको अपना fifth या even at times fourth bowling option use करते हैं because Great they point. use him so well, especially if you look at the circumstances of their spin department. You do not have any, such glaring big name there, but they had to take a lot of work out of him, and I think that he has done splendidly well. So I think ये एक point I thought I should add. टाइम फॉर द कर्टेन्स। आप ड्रम रोल भी करेंगे बिकॉज टॉप 3 रह गए, एक्साइटमेंट शुड बी लॉट मोर। टाइम फॉर द कर्टेन्स, टाइम फॉर सम ड्रम। एंड नंबर 3, लेट्स हियर हु इट इज। हियर वी गो। शाहीन शाह अफरीदी। ओके जी, तला वो चीज ग्रांटेड हो चुकी है। आपके पिक में थोड़ा सा लोअर डाउन द ऑर्डर है, लाइक उसामा भाई और आपकी पिक काइंड ऑफ सेम मैच हो रही है, राइट? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू गाइस फर्स्ट। सो तला, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, शाहीन शाह अफरीदी पे बात करें। आई थिंक सेम एज शादाब। अगर 3-4 साल बाद यही हम रैंकिंग करें तो ही विल बी मच हायर, बट सो फार he's been Pakistan's second best player in T20 World Cups after Shadab in 21 and 22. Or 22 mein he was if not even at his best. So Yeah, hopefully he will be at his best in the upcoming World Cup, and if he does well, I think he can definitely climb up these rankings. So same as Shadab, he is still 23, and in this case I doubt there's much like age fudging. Even he generally does look 23, so he has plenty of time ahead of him. And yeah, I think at the end of his career he easily be in the top 3. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसामा भाई, थोड़ा सा डाउन द पैकिंग ऑर्डर है, लाइक कंपैरेटिवली देख रहे हैं, सो व्हाई अ बिट डाउन द ऑर्डर फॉर यू? Like उसमें one of the reasons I do, like if I look at it, how I look at T20 players is more of like their overall utility, वो कैसे आती है, like I know Shaheen has started to bat as well now, but like primarily like he's still developing on that front. So like in terms of that, वो सिर्फ bowling or like new bowling पे तो कोई question marks है ही नहीं, or like death bowling I feel like is one area where you might have to improve a little bit more. And of course I know he will with time how much potential and skill that he has, but like उस पे मुझे थोड़ा था, and of course like some of the other guys were probably more had a stellar record. Like of course he still has a stellar record, but he's little new on the scene in comparison to guys like who have been like 10-12 साल से around. So उस वजह से वो थोड़ा down the pecking order. थोड़ा सा डिसएडवांटेज ऑफ कोर्स शाहीन शाह अफरीदी को है। ज़ैद की तरफ चलते हैं। एलक्यू फैन बॉय, 2 पीएसएल टाइटल्स बैक टू बैक जितवाना इज अ रेयरिटी। सो ज़ैद, गो लिरिकल अबाउट योर प्लेयर। यार आई थिंक के हम जिस तरह
लास्ट वर्ल्ड कप की भी बात हो रही थी, लास्ट T20 वर्ल्ड कप में अगर देखा जाए तो ठीक है, शाहीन वाज़न्ट एट इट्स बेस्ट, लेकिन उसने हाँ 2 गेम्स में जो है वो 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट गेम में आपको लाइक काफ़ी क्रूशियल कंट्रीब्यूशंस करके दी थी। इंडिया वाली गेम में जो है वो उसकी बॉलिंग में भी उतनी अच्छी नहीं थी, बट एंड पे उसने बैटिंग में एक आधा कैमियो खेला था जिससे आपका लाइक टोटल काफ़ी बेहतर लग रहा था आई थिंक इन कंपैरिजन। और उसके अलावा न्यूजीलैंड वाली गेम में भी आई थिंक काफ़ी हम अंडर एस्टिमेट करते हैं उसका जो पार्ट था कि लाइक ठीक है वो बाबर रिजवान की लाइक ओनली गुड इनिंग्स थी उस टूर्नामेंट में, प्लस लाइक काफ़ी कंफर्टेबल चेज था, बैटिंग काफ़ी अच्छे बाद टूर्नामेंट के लिए की थी, लेकिन स्टिल आई थिंक कि वो लाइक एक सेटअप किया गया था बाय शाहीन जस्ट लाइक द इंडिया गेम इन 2021। आई थिंक लाइक काफ़ी क्रूशियल मोमेंट्स, इवन अगर आप डेथ बॉलिंग की सामने बात करें तो इवन ऑस्ट्रेलिया वाली जो गेम थी T20 सेमीफाइनल, उसमें भी शाहीन का जो न्यू बॉल स्पेल था वो काफ़ी लाइक अच्छा था। तो आई थिंक जा की मोमेंट्स पे वो जो क्लच प्लेयर वाला फैक्टर है वो काफ़ी एक इसके अंदर है। जा और दूसरा 2 PSL टाइटल इकट्ठे जीते तो कैप्टनसी का भी एक फैक्टर आता है थोड़ा बहुत। जा ठीक है, ये एक थोड़ा बहुत आई थिंक ऑल उसका राइट डिसएडवांटेज है कि बाहर की लीग में इतना खेला भी नहीं है तो इतनी परफॉर्मेंस नहीं है, बट बाकी आई थिंक के टॉप 4 काफ़ी डिजर्व करता था। परफेक्ट परफेक्ट हो गया। ओके अरम और इमाद, एक आप में से एक को स्किप करना चाहूंगा। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लास्ट टू, वी आर काइंड ऑफ रनिंग आउट ऑफ द टाइम। अरम, एनी परफॉर्मेंसेज यू वांट टू हाईलाइट या जिस बेसिस पे आपने फिफ्थ पे पिक किया? Yeah, I think मेरा reason for picking Shaheen was particularly the fact कि अगर आप for the last few years देखें, before we had Shaheen in the 11, the Pakistani bowling attack, I think आमिर के अलावा एक एक you know we always used to have a bowler that used to struck the opponents by वो एक डराने वाला bowler जो था, आई थिंक कि वो स्ट्राइक फियर इन द माइंड्स ऑफ योर ओपोनेंट्स वाली जो बात है, आई थिंक आमिर के बाद when we did not have his services for the later on time, I think Shaheen was the only bowler that provided us for some period of time. I think एक ये फैक्ट है, बाकी numbers की सबने बात की, he's been splendid, he's done so well in the या PSL. I think ये I think I should contribute to that. ऑल राइट, लास्ट टू प्लेयर्स बेसिकली बच गए। अरम ने कहा है वही कि दिलेरी वाला जो और वो फेंटे वाला और दिलेरी वाला जो शेब अख्तर वाले स्टाइल में जो फैक्टर है ना वो शाहीन या के या पास है। Oh, speaking of Shoaib Akhtar, बैकग्राउंड just a बैकग्राउंड म्यूजिक। uh, Ahmed bhai, Ahmed bhai, just a little anecdote. Speaking of Shoaib Akhtar, so during the IL T20, Shoaib Akhtar asked him कि आप जो हर बॉल पहले ओवर में अंदर लेके आते हैं तो बैट्समैन को जो पता है और आप बहुत प्रिडिक्टेबल हो चुके हैं, तो he said फिर भी नहीं खेल पाते. So that just summarizes Shaheen's impact. या इस बिल्कुल इसी बात पे उस्मान समीउद्दीन ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी लिखा था 2021 वाले वर्ल्ड कप के राउंड अबाउट, जब रोहित शर्मा आउट हुआ था। दैट इज अ फैसिनेटिंग आर्टिकल टू रीड आउट। ओके, लास्ट टू प्लेयर्स बच गए हैं। आई थिंक सो शायद सबको पता लग चुका है कि हम किस तरफ Actually, जा like रहे हैं। he wrote that article before the match, or हाँ the एक prediction आधी came रात true in पहले the लिखा match. था। या वही बिल्कुल चीज वही। ओके, लास्ट टू पिक्स रह गए। आई थिंक सो सबको अंदाजा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, बट लेट्स से अगर कोई ट्विस्ट रह गए और नंबर 2 प्लेयर्स में से मैटर करता नहीं करता। कर्टन्स टाइम, या शाहीन शफीदी, गुड बाय फॉर नाउ। नंबर 2 की तरफ चलते हैं एंड हियर वी गो। वैसे इंग्लैंड के एंथम में आता है लॉन्ग लिव द क्वीन बट लॉन्ग लिव द बटलर, वो लोग कहेंगे। उसामा भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, क्योंकि आपने फर्स्ट नंबर पे पिक किया है। अभी तक की पहली लाइक जो भी लिस्ट हम स्क्रॉल डाउन कर चुके हैं, ही इज द फर्स्ट गाय। सो उसामा भाई, इट इज जस्ट फेयर टू स्टार्ट फ्रॉम यू दिस सेगमेंट अबाउट जोस बटलर। Yeah, like amazing player, और like उसकी performances बहुत अच्छी हैं, और like properly like अगर इंग्लैंड की बात करें, like someone who you can call the face of their white ball revolution, that's Josh Butler. और he's been brilliant like throughout, और like especially like एक जो चीज़ है कि जो impact he creates with his innings, like और innings भी उसने बहुत अच्छी खेली है, but one which sticks with me is like the World T20 के जो final में इसने innings खेली थी, like
yes, a lot of people talk about okay, how Stokes stuck through that innings, but if Butler had not played that innings at the top, despite Naseem continuously beating him and all, so it might have been a very different case. So in terms of that, Butler is one of those guys like who's very very clutch, very big moment there, who comes in handy like when you really need him. जब 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 जैद आपकी पिक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है क्योंकि छठे पे पिक किया हुआ है क्या डिमेरिट्स लगे आपको जोस बटलर के केस को लेते हो यार मैं एक मिनट, मैं ना एक सेकंड बिल्कुल, मैं आपको प्लेयर्स के नाम बता दूं जो मैंने इससे ऊपर रैंक किए थे। तो वो एक तो वो है जो नंबर 1 पे होगा, दूसरा ड्रेरस, बुमराह, शाहीन, मैक्सवेल और उसके बाद बटलर था। तो आई थिंक बटलर ने जो है वो शाहीन के ऊपर कैसे आया यार मतलब शाहीन के नीचे कैसे आया मुझे ये बताओ मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल बताता हूँ। शाहीन के नीचे इस तरह आया है क्योंकि बटलर ने मेरा नहीं ख्याल 2022 के T20 वर्ल्ड कप के अलावा कोई खास बिग स्टेज पे परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं इंटरनेशनल में, T20 में। लाइक वर्ल्ड कप अगर देखें आप तो वर्ल्ड कप में कोई खास ना, लाइक 2021 साल में कोई खास परफॉर्मेंस थी नहीं। उससे पहले लाइक कह सकते हैं आपके इंग्लैंड की वाइट बॉल रेवोल्यूशन नहीं हुई थी जो सारी हुई थी। तो आई थिंक ये वजह थी कि मैंने ज़रा इतना उसको नीचे रेट किया लिखा हुआ था, वरना आई थिंक वो काफ़ी एक सॉलिड प्लेयर है। बनी नहीं बात जैद बनी नहीं बात यार शाहीन ने 2 बटलर T20 वर्ल्ड कप में अच्छी कंट्रीब्यूशन की है, बटलर ने एक में किया। वर्ल्ड कप किसने जितवाया है अब शाहीन का कसूर तो नहीं ना कि आपकी बैटिंग को T20 में बैटिंग करना नहीं आती। नो मैन अगर बाबर यूटिलाइज सही से नहीं कर रहा अपने रिसोर्सेज, एक बंदा कर रहा है रिसोर्स यूटिलाइज, फाइनल में अच्छी इनिंग्स खेल के दिया है, व्हाट तो एल्स यू आप वांट बाबर फ्रॉम वर्सेस हिम बटलर नहीं आईपीएल कह में रहे, अच्छी बाबर वर्सेस बटलर में तो इजीली बटलर है ना। बाबर बटलर वर्सेस शाहीन की बात करें ना आप यार। शाहीन से नहीं हटने लगा एल के फैन बॉयज। किसकी तरफ मूव करें नेक्स्ट? इमाद आपके लिरिक्स सुनते हैं अबाउट जोस बटलर। I think Jayad Bhai is also like T20 World Cup he was talking about. I think he was great in the T20 World Cup that happened in 2016 in India. He produced that beautiful performance Here we against Sri go. Lanka. Like early wickets England ke fall ho gayi thi, I believe, भागना नहीं है अब and then he came in and like scored a quick fire 68 or something, and then in the semi-final against New Zealand he came in and finished the game. And I remember Nasir Hussain's line ke Butler is in a hurry to get to Kolkata. So and iske alawa like such consistent seasons in IPL, like he's been the highest run scorer in a lot of seasons there, opening the batting for Rajasthan Royals, as well as the fact that he scored so many centuries. We were talking about centuries for Glenn Max, and obviously it's more impressive that he scored down the order. But still, the kind of centuries Butler has scored is impeccable to say the least. And again, the captaincy credentials come in too. So yeah. Okay, one thing I would like to add कि if I remember correctly 2016 में रॉय और हेल्स ने ओपन किया था for England and Butler started opening after that. तो उसके बाद 5 साल का गैप भी आया था between World Cups, so he couldn't really like maximize the contributions in World Cups as opener. ग्रेट पॉइंट यार लेकिन फिर वही बात है ना, 2018 वर्ल्ड कप लाइक किसी भी प्लेयर ने ना खेला बेसिकली, तो सारों के लिए एक तरह से इक्वली चीज है वो। हाँ, लेकिन पहले बटलर लोअर ऑर्डर का बैटर होता था ना जब उसने ओपनिंग स्टार्ट की। आई थिंक 17-18 में भी काफी उसने रन्स किए थे। हाँ बट आप ये भी कह सकते हैं 2018 में अगर यूएई में वर्ल्ड कप होता तो पाकिस्तान जीत जाता सरफराज की कैप्टनसी के अंदर, और ये वो तो नहीं कह लो भाई, कह लो, वो भी कह सकते हैं, श्योर व्हाई नॉट। एटलीस्ट सरफराज को यूटिलाइजेशन आती थी रिसोर्सेज की। relatively better, but अपनी यूटिलाइजेशन सही से नहीं करता। But one point that I would like to make about Butler is that Butler was basically replacing Ian Morgan as captain in white ball cricket, and Ian Morgan is a guy that has a lot of respect in the English circle for how he has transformed a white ball game. And to replace him and actually like go on to win the trophy like from 2021 to 2022, like because 2021 में तो ये था कि everybody was expecting कि England की team बहुत अच्छी है and they were like
the hot favorites. But 2022 में वो थोड़ा था कि will Butler be able to sort of uh, continue that जो process Morgan ने start किया, तो so that's why you can rate his win, World Cup win, as like कि वो big, he had big boots to fill in. Yeah, yeah. Had I been on the other side of things, I would have mentioned this point as well, because grades की legacy को carry on करना, it is not an easy job at all. और फिर उसको match Just कर to be a देंगे. devil's advocate about this, Owen Morgan wala point. Don't you guys think because Morgan was such an outstanding captain, and he built England's T20 and one day team, and he was part of the white ball revolution. He was actually the ringmaster of the white ball revolution. You don't think Butler actually got a very set team because of him, and it can be used as a counterpoint if you will? Anyone of you? Yeah, I agree with you. Like, he had got a very set team, but like still to win that and to like utilize those resources, like you still have to do that. Yeah, yeah. Standards होने ना गिरे ना जिसने इमाद. कहा कि वो लाइक स्टिल यू हैव टू यूटिलाइज दैट, तो मैं भी जैसा सरफराज की बात कर रहा था, लाइक पाकिस्तान की काफ़ी अरसे बाद काफ़ी अच्छी टीम थी वो, लाइक शादाब, फहीम, इमाम, वो सारी दुनिया जन आई थी, उसके बाद बेसिकली बाबर ने सही यूटिलाइज नहीं किया, तो आप नहीं जीत पाए. सही है, सही है, सही जा रहे बहुत हैं, गाली सही जा थी रहे मुझे. हैं. Yeah, going Okay. from 11 consecutive series wins to almost nothing, I think Zaid has made a good point to Imad's counter argument. All right. Great. ये अच्छी डिबेट इधर आके बनी. Unfortunately, we have to cut it down here. इंशाल्लाह अगली सिटिंग में ये पॉइंट्स आते रहे. इस बात चुकी है. But let's give him a proper warm welcome. Drum roll first. Then his announcement. And here is their anthem. Okay, जी. ARD के पैनल पे नंबर 1 हैज बीन पिक्ड राशिद खान. ऑफ कोर्स. तला आपके भी 8 पॉइंट्स हैं, जस्ट रॉन्गली पुट डाउन हियर. सब ने फर्स्ट सेकंड पुट किया हुआ, बल्कि लाइक 4 पीपल्स ने फर्स्ट पे पिक किया हुआ है. सो उसामा भाई, आज के शो के आप चीफ गेस्ट हैं. लेट्स हियर योर थॉट्स अबाउट राशिद खान, और मार्जिनली जरा नीचे आए तो व्हाट वाज दैट फैक्टर? Like जो ये जितने like जो राशिद खान जैसे players हैं, like I put them in the category along like Andre Russell, Glenn Maxwell, like these are the similar sort of players जो कि एक अलग लीग में in terms of you look at उनकी जो पेडिग्री है, उन्होंने सारी दुनिया में परफॉर्म किया हुआ है, जो भी लीग्स हैं, whether IPL है, Big Bash है, PSL है, you name it, they've performed everywhere. So like yeah, Rashid is like one of those things, is one of those players. Like अगर वो एक टीम में हो तो they can win. Like अभी हमने इस तरह सीजन में देखा कि लाहौर पे कितना इम्पैक्ट था because Rashid was not there, तो वो बॉलिंग अटैक ही बिल्कुल toothless लग रहा था without him. So in terms of that, Rashid is a player that anybody would have in. और बाकी like number second पे वो it's sometimes कि आपको नाम कोई पहले आ जाता है तो you write that पहले, वरना he's pretty much the top, one of the top players in the world. ओके, देखते हैं कौन किस एंगल से फ्लावर्स फेंकता है. अरम, आपकी तरफ आ जाते हैं. प्लीज बी क्विक एवरीवन. आई हैव टू जंप ऑन टू समथिंग एल्स एज वेल इन 2 or 3 minutes, so let's find it out. Yeah, I think his numbers speak for himself. He's played all around the world, performed in any league you name it. From, I think, had he been given more opportunity, एक तो coming from a country or a background कि आप obviously you are at a clear disadvantage. If you look at the talent he has, and had he been playing for example, England or Australia, so kitna different he would have been in a major league. He would have created his own league, in my opinion, of players that we could put in there. But I feel there's no doubt that he is currently, and I think for a longer period of time will remain the top player in T20 cricket.
या और फिटनेस प्रिजर्वेशन बहुत कमाल किया है, हाई एनर्जी रहता है, हाई ऑक्टेन पे रह के खेलता है, उसके बावजूद इतनी फिटनेस प्रिजर्व करना, फॉर मी दैट रियली स्टक्स इनटू द माइंड. तला, एनी शॉर्ट नोट फॉर राशिद खान? Yeah, I think for me, जब T20 में बैटर्स और बॉलर्स को कंपेयर करें, स्पेशली करंट कॉन्टेक्स्ट देख लें IPL का, सो आई विल ऑलवेज गिव मोर वेट टू अ बॉलर्स परफॉर्मेंस, चाहे वो बैट्समैन से थोड़ी कम इम्पैक्टफुल भी हो, बट आई वुड Yeah. रैंक इट एज यू नो something that merits more recognition and appreciation. And uh, yeah, Rashid, like he's someone like Shaheen who bowls predictably, but he's still hard to get away for runs. So I think that's something very rare. And an underrated factor is that All he right. can also become like a top 7 batter, even play at 6 maybe. हाँ, बैटिंग बहुत अला कैमियोस खेल के देता है. इमाद, योर नोट्स अबाउट राशिद खान, प्लीज बी शॉर्ट. Yeah, yeah. So Mohammad Nabi was the first sort of the player from Afghanistan to go global, right? But Rashid Khan is someone जिसके rise के बाद से Afghanistan haven't looked back. So I sort of see him as a symbol and actually the beacon of Afghanistan's rise in cricket. And obviously everyone talked about the stats, performances, and everything. So and you want to keep it short as well. So I would just end up with the honorable mention of his helicopters. I mean, they are incredible, Great and shout, yeah, great shout. they might just be better than better than MS Dhoni's helicopter shots. Oh, great shout, bold shout, bold shout. Wonderful segment. Zad, of course, आपको दो titles भी जितवा चुका है. Any performance which really comes into your mind right away? सोचा. यार मैं भी लाइक ऐसे ही चेक कर रहा था कि मोस्ट T20 ट्रॉफीज, वो मुझे लगा था राशिद खान का ही होगा, लेकिन टॉप 5 के करीब नहीं है वो, बट स्टिल मैं हाल पिछले कुछ सालों में उसने MLC जीती है, PSL जीती है, IPL जीती है, FA20 का फाइनल खेला है. तो आई थिंक ये लाइक 3 ट्रॉफीज T20 जीता है वो. उसके अलावा क्या कहते हैं, एक का फाइनल खेला है, और एक काफ़ी लाइक बड़ी लीग है. अगर आप हमारे टॉप 5 T20 लीग अगर देखें क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के लिहाज से, तो आई थिंक वो वहाँ लाइक आएंगी ये सारी की सारी लीग्स. तो एक ये भी, और दूसरा आपने मैच की बात की PSL में, मुझे याद है PSL 6 के अंदर एक गेम थी पेशावर जमी वर्सेस लाहौर कलंदर्स कराची में. उसके अंदर बॉल रिवर्स काफ़ी हो रही थी और डेथ में लाहौर को काफ़ी रन चाहिए थे. साकिब महमूद था एक, और एक बाबर रियाज था. ये दोनों रिवर्स बहुत ज़्यादा कर रहे थे और हफीज़ एक साइड पे खड़ा हुआ था. तो वहाँ आई थिंक राशिद खान ने लाइक मैच फिनिश किया था एक दो हेलीकॉप्टर मार के, जहाँ बॉल अच्छी खासी रिवर्स हो रही थी. Great recollection, yeah, great recollection. So here it is, the final list. Rashid Khan as number 1, followed by Joe Butler, number 3 Shaheen Afridi, followed by Glenn Maxwell, Dre Russ at number 5, number 6 पे finish किया Jasprit Bumrah ने, number 7 पे Shadab Khan, and list is finalized by David Warner. Not finalized fully because जैसे मैंने intro में बोला था, audience you have your say on number 9 and number 10. We're gonna gauge from your votes. So that is all for now. Let's have parting thoughts from Osama, and other person I am gonna pick is Talha. So Osama bhai, first chat, wonderful chat it has been. Thank you so much for coming. Any parting thoughts from your side? Yeah, thank you very much for having me, and it was very good talking to you all and sharing your best top 8 T20 players. Or like, yeah, I think pretty much we have got a fair number of fair players like जो के deserving हैं, and I don't think Yeah. so there were any major missings from everyone. Like we all had pretty much the same Yeah. Perfect. number of Perfect. players. Yeah. Yeah. And of course, please do check out his brilliant work on TPA podcast. अभी एसन नागी इनकी podcast पे आते. That is a wonderful episode which I have listened. अभी पूरी नहीं सुनी. I would try to listen it in the full. Tala, parting notes about the show itself, कैसा लगा आपको? फर्स्टली आई थिंक आपने अच्छा किया कि मेरे रैंकिंग उल्टे कर दिए, शायद आपको थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गए थे. और सेकेंडली आई थिंक जो टॉप 8 आया उसमें से आई पिक्ड
all 8 of them. So I don't know if I'm the Yeah, only one. I think maybe you were the Arham only played as person. well. I'm the okay. No, no, you were the only person. You were the only person. Okay, so I kind of like what's represented everyone's thoughts. Yeah. Huh. So yeah, it was really nice, and the criteria was tough because players like Sunil Narayan, वगैरह, Pollard, they weren't eligible. Yeah. So it was a good criteria because we can also like see these players in the World Cup and gauge whether Yeah. we've ranked them correctly or not in a month's time. Yeah. ये अच्छा होगा कि जब हम वर्ल्ड कप देख रहे होंगे तो हमारे पॉइंट्स कहाँ पे जा रहे हैं कहाँ पे नहीं जा रहे सो या व्यूअर्स दैट वाज ऑल फॉर टुडे इवन भाई आपने मुझे कहा कि मैंने शाहीन को एलक्यू बायस में ऊपर रखा है तो तला ने भी ऐसे इस्लामाबाद बायस के अंदर शताब को ऊपर रखा था नहीं शताब को एक पॉइंट ही दिया मार्जिनली नंबर 8 पे रखा मैंने सिर्फ इसलिए कि मुझे बायस के 1 कुछ point अच्छे लग रहे हैं वरना थोड़ा ऊपर भी हाँ रखा तो था। इस तरह तो पहले मैं हारिस रऊफ को नंबर 8 पे रख रहा था यार या हारिस रऊफ शाहीन शाह अफरीदी क्या कहते हैं राशिद खान सारी एलक्यू की आधी लिस्ट भर दी थी इसने ज़ैद ने। डेविड वीजा को तो नहीं रखा था जैद ने Okay, यार मैंने बताया okay, ना guys. ट्रॉफीज वाला मेरा मैट्रिक था नहीं ना वीजे को भी रख लेता है इस हिसाब से वीजे की जगह बन जानी थी Okay, guys. Fine, fair मेरे enough. बल्कि एक और बात एमबी एक छोटी सी बात मैंने अपने टॉप 8 में रखा था ग्लेन फिलिप्स को वो किसी ने भी नहीं रखा है मैं वो सोच रहा था तब से पहले ये आप सारे जाके घर सोचे कि ग्लैन फिलिप्स क्यों नहीं रखा वर्ल्ड कप में देखेंगे क्या असेसमेंट आती है let's call it a night for now a good food for thought thrown by that viewers please give a follow to each one of them मेरी जॉब बहुत ज़्यादा इजी बना दी with wonderful points they throw in और ये नहीं कि एक ही बात दूसरे ने पकड़ ली और वही बात रिपीट कर दी हर बंदे ने डिफरेंट इनपुट्स इन दैट वर रियली अमेजिंग आई हैव बीन noting few takeaways from each one of your inputs so really humbled really thankful to each one of you बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके viewers please drop your thoughts your feedbacks हम इस फॉर्मेट को कैसे बेहतर कर सकते हैं please drop your feedback about this particular thing as well so yeah on that note good luck Pakistan cricket good luck Pakistan in general and yeah viewers